Hi guys, how are you all? Welcome to my YouTube channel. So this is going to be the very first video of my YouTube channel. First, let me give you a very brief introduction about myself. My name is Aritra Banerjee. I am currently studying MBBS from Bankura Samudari Medical College and Hospital. It is from West Bengal, India. I joined MBBS back in 2019. So I am currently in my third part 1 now. In my video, I am primarily addressing to all the NEET aspirants of 2023, to all my beloved brothers and sisters who are actually living the beautiful dreams of becoming a doctor in future. So I want to assist you all in your journey. In my video, I want to share the important strategies, the important tips and tricks which is going to definitely help you in your preparation. Actually, in my video, I also want to share the important must-know strategies which I have learned from my own mistakes during my preparation, and also done by many of my juniors and batchmates as well, which I came to know after a detailed interaction and discussion with them. As we all know, that NT has suddenly gave the update that in NEET 2023 this year is going to be conducted on 7th May. So that means we have only 3 months left for the preparation. Now, within these 3 months, you have to prepare yourself efficiently so that you can crack this exam. You have to make yourself that much competent and efficient so that you can crack this particular exam. So now the question arises that is it really possible to crack NEET within this just 3-month time period? So here, different people will give you different kind of opinions. But if you ask me, I'll give you a very simple answer that it hasn't any answer. The reason is simple, because it depends upon you, how much effort you are putting into it, how perfect your strategy is, how much balance is there in between your hard work and smart work, how is your preparation right now, how much persistent you were at your studies since the last 2.5 years. So according to me, even before thinking of appearing for a particular competitive exam, each and every candidate should try to analyze the exam to understand the pattern of the examination. You should try to find out that you should try to find out the mindset of the question setter. You have to understand what the examiner actually want every candidate or student to know. So you have to find out that to crack NEET UG, is it really necessary to have an in-depth knowledge of every topic, or you should be very much thorough with your own textbook, that is NCERT, each and every words and lines of it. So if I have to answer this question, that is it still possible to crack NEET in just 3 months time period, then I have to explain a few points. First of all, you have to understand that NEET UG is not a tough exam. Yes, you have heard it correct. The NEET UG is not a tough exam. Yes, the competition is huge and it is increasing day by day. So it is becoming harder to get selected every year. But you have to understand that the standard of the paper is not at all tough. Basically, in every year NEET paper, two things are basically checked. Number one, whether your basic fundamentals are clear or not. And the second one, whether each and every lines and words of the NCERT is at your tips or not. So here I would like to divide all the NEET aspirants into 3 categories. So the first categories are those students whose preparation is excellent right now, who were very persistent in their studies since the 11-12 or in the repeat years, and who are getting consistently a very good marks in the mock tests. So if they can continue the progress in the next upcoming 3 months, they will definitely get a great rank in the examination, no doubt. So now come to the second category students, the most important category according to me, who have at least read something throughout the year. But I can assure you, if you can put your maximum effort into it, if you can give your maximum potential, and if you can follow the plans and the strategies which I will share with you, then I can assure you, you will get a government seat this year itself, definitely. And finally comes the third category students who haven't read anything throughout the year, whose preparation is exactly at the zero level right now.
So let me be very frank with you. Most probably it's not possible for you to crack this particular exam this year, but that doesn't necessarily mean that you will give up and do nothing in the next upcoming 3 months. So now I would like to explain why the third category people who haven't read anything throughout the year or in their 11 12 should not give up, and they also try to give their 100% effort, 100% potential into their preparation. The simple reason behind that is, okay, first have a look on this picture, on this beautiful picture. What is this? A man is climbing a mountain. So what message I want to convey to all of you is that walking through the path towards a success is exactly like the climbing a mountain. So basically, just like you also have to confront a lot of hurdles, a lot of difficulties while walking through your path. As you can fall down, but you have to stand up. You have to feel yourself with a lot of motivation, with a lot of hope, and again you have to start, and you don't have to stop. You cannot stop unless and until you are not reaching the goal. So what I am trying to say you that so basically from this is the starting point, and this is the point of success. The distance between the point of success and the starting point is always constant. Now it depends upon you when you are starting. If you can start early, then obviously you will get the success earlier. But if you will do delay, then obviously it will take more time to get the success. So please, my earnest request to all of you, please start early and don't waste the upcoming, I think, 2.5 months. So basically, don't waste the time absolutely, and utilize the time properly according to the proper study plan. Okay. एंड जस्ट मैंने जैसे कि मैंने आपको ये एग्जांपल दे दिया कि आपने कुछ फिजिक्स में जैसे कि ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स आपने अच्छे से कवर कर लिया. यू हैव कंप्लीटेड ऑल द वीडियोस, यू हैव सॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स, you have done the previous year's questions, and you got confidence that okay, this part is ready for me. Try to make you a better version of yourself on the 7th May. Don't waste the time. डोंट ऐसे मत सोचो कि मैंने तो कुछ पढ़ाई भी नहीं किया, अगर मैंने अभी पढ़ाई भी किया तो क्या उखाड़ लूंगा. Please don't think like that. Start early and utilize the time carefully. Okay, so now come to the important strategies, that what should be our target for this upcoming NEET UG. So since the last year All India Counseling में cut off गया था around 608. So this year, according to me, your target should be at least 620 plus. At least 620 plus. Obviously, I am talking about the All India Counseling because in some states the higher cutoff is even higher. Like अगर चलो मान लेते दिल्ली में obviously 650 के around आपको लाना पड़ेगा if you are a general candidate. Okay, so this is a very important thing. So subject wise target का अगर बात करूँ तो biology में, since obviously as far as the NEET UG is concerned, biology is the most important subject, no doubt, because it is carrying the 50% of the marks. So obviously देखो बायोलॉजी में एटलीस्ट 340 आपको लाना ही पड़ेगा. बेहतर है अगर इफ यू कैन स्कोर एट मोर देन 350. ओके, देन यू विल बी मोर टुवर्ड्स द सेफर साइड. ओके, so now come to the biology. So biology हो गया. अब now come to the chemistry. So chemistry में देखो, chemistry is again a very scoring subject. नीट में chemistry का जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बहुत ही आसान होता है. ठीक, if you have your basics clear and if you are very thorough with your NCERT. देखो जैसे कि आपको obviously ये inorganic chemistry तो obviously हो गया. देखो inorganic chemistry के सारे क्वेश्चन आपको NCERT से ही पूछा जाता है. और नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑल्सो, सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन भी इज बहुत आसान होता है. एंड दैट इज ऑल्सो इफ द इवन इफ द स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कम्स, देन दैट विल बी ऑल्सो फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम योर NCERT. सो you should be thorough with your NCERT for from both the organic and inorganic point of view, and also you
आपको अभी फिजिकल के लिए जितना भी क्वेश्चन आपको, देखो फिजिकल के लिए आपको थोड़ा बहुत आपको जो बेसिक्स आपको क्लियर होना चाहिए, और आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। और हाँ, ऑब्वियसली एक पॉइंट आपको मैं ये यहाँ पे रिकमेंड करूँगा कि देखो एनसीईआरटी का जितना भी सॉल्व्ड आउट एग्जाम्पल है फिजिकल केमिस्ट्री का, वो आप कर लेना। ओके, सो देखो 150 प्लस लाना इतना भी मुश्किल नहीं है। इफ यू हैव योर बेसिक्स क्लियर, देन यू कैन इवन स्कोर इवन इवन मोर। या आई थिंक मेरे हिसाब से एटलीस्ट 160 प्लस तो होना ही चाहिए, बट ठीक है। अब एटलीस्ट फॉर नाउ आई एम टेकिंग दिस टू बी 150। एंड नाउ फाइनली कम द important सब्जेक्ट फिजिक्स। तो क्या है, आई नो for 90% of the NEET UG candidate, physics, they find this particular subject to be their most difficult, because they do not love physics, they do not love mathematics. So majority of the students find it difficult. That's why I have taken it to be 130 plus. Again, the physics question which generally comes in NEET UG is again very simple. कभी आपको कोई भी टॉप क्वेश्चन नीट यूजी पे कभी नहीं आता। आप प्रीवियस ईयर्स देख लो, इफ़ यू हैव योर बेसिक्स क्लियर, अगर आपको बेसिक फंडामेंटल अगर आपको क्लियर है, और अगर आपको फॉर्मूलाज वगैरह मतलब अप्लाई करना आते हैं, इफ़ यू जस्ट मैक्सिमम क्वेश्चन ऑफ नीट यूजी इज एग्जैक्टली लाइक इफ़ यू जस्ट नो द फॉर्मूला, जस्ट पुट द वैल्यूज एंड गेट आउट द आंसर टाइप। ओके, सो ये बहुत आसानी होता है बेसिकली। और देखो बेसिकली मैं आपको एक चीज़ बोल रहा हूँ कि देखो आपको अभी सेक्शन ए सेक्शन बी है, सेक्शन बी में आपको 15 क्वेश्चंस है, जहाँ पे आपको ऑप्शंस है, और वहाँ से आपको 10 क्वेश्चंस करना है। द सिंपल थिंग इज दैट यहाँ पे ऑलरेडी आपको ऑप्शंस मिल रहा है। देखो अगर आपको 10 क्वेश्चन भी आपने अगर छोड़ रहे हो, तब भी आपको बेसिकली मार्क्स आना चाहिए 140 is very minimum marks. Okay, still I have taken it because maximum student को ये confusion आता है। So at least this target आपको मतलब लेके चलना पड़ेगा कि biology 340, chemistry 150 plus and physics 130 plus. Now come to the next part, next important thing, that what the materials, what the materials that you should use in the upcoming 3 months. So the first important thing is your own textbook NCERT. Obviously, most particularly, I am talking this for biology mainly and chemistry. Physics के लिए मैं उतना recommend नहीं करूँगा physics को। आपको ज़्यादा आपको क्वेश्चन न्यूमेरिकल से प्रैक्टिस करना है। आई विल नॉट रिकमेंड मच फॉर फिजिक्स, बट एटलीस्ट फॉर बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, दिस इज योर गॉड, दिस इज योर बाइबल, दिस इज योर भगवत गीता और वॉट एवर। ठीक है ना, सब कुछ यही है आपका, तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही है। नेक्स्ट चीज जो होगा, दैट इज योर ओन क्लास नोट्स और योर सेल्फ प्रिपेयर्ड नोट्स। आई एम एम्फसाइजिंग इट दिस पर्टिकुलर पॉइंट अगेन एंड अगेन, बिकॉज दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट आपको आपको जो खुद का बनाया हुआ जो नोट्स है वही आपको पढ़ना है, जो आपने खुद अपने क्लास में प्रेजेंट थे, आपने खुद वीडियोस देखा और ऑफलाइन क्लासेस अटेंड किया, आपने खुद जो नोट्स लिया, दैट शुड बी योर इंपॉर्टेंट मटेरियल, योर ओन क्लास नोट्स और द सेल्फ प्रिपेयर्ड नोट्स। ओके, next come to the your tuition modules, or the tuition modules or your coaching modules. Now the important thing is that as far as the tuition modules is concerned, please only use them for your MCQ solving purpose. Okay, so only for solving the MCQs, and that is also for physics and chemistry only. दिस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री, देखो आपको ट्यूशन मॉड्यूल का जो असाइनमेंट पार्ट है एमसीक्यू सॉल्विंग के लिए आप वो यूज़ करो, अदरवाइज आपको थियोरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसके लिए आप एनसीईआरटी रेफर करो। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ कम टू द इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट व्हाट अबाउट बायोलॉजी। देखो ट्यूशन मॉड्यूल का जो असाइनमेंट है बायोलॉजी का, वो अगर एनसीईआरटी बेस्ड है, उसमें अगर एनसीईआरटी का मतलब क्वेश्चन है तभी आप सॉल्व करो, अदरवाइज नॉट। प्लीज ओनली सॉल्व इट। देखो आई हैव ये इसलिए मैंने लिख के भी रखा है। और देखो क्या है कि ये इफ ओनली इट इज एनसीईआरटी बेस्ड, देन ओनली यू यूज इट, अदरवाइज नॉट। if it is not NCERT based, then just refer to any other MCQ biology practicing book or any other apps, और जब भी वो अभी बहुत सारे apps भी अभी अवेलेबल है। आई डू नॉट टेक इट, आई रियली डोंट वांट टू टेक इन नेम्स, बिकॉज आई डोंट वांट टू प्रोमोट एनी एप्स और ऑन द बुक्स, बट ये आप खुद देखो। पर आपको कुछ अब जो भी कुछ करो, बट दैट शुड बी NCERT बेस्ड। आई एम again and again stressing this point, because देखो अगर टफ क्वेश्चन पूछे, if any tough question comes from the biology section, then also that will be conceptually tough. Please try to understand that never आपको कोई ectopic informations नहीं पूछे जाते हैं। जैसे कि लास्ट ईयर 2022 में फिजिक्स का पेपर टफ था, बट दैट वाज नॉट वेरी एग्जॉस्टिव, दैट वाज नॉट एनी कि कोई बाहर से कोई ectopic कोई टॉपिक पूछ लिया है।
कोई इंफॉर्मेशन पूछ लिया है, दैट इज एब्सोल्युटली नॉट लाइक दैट. अगर टफ क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, दैट विल बी कंसेप्चुअली टफ. इफ यू हैव योर कॉन्सेप्ट्स क्लियर, देन यू कैन इजीली क्रैक देम. So please don't running behind any kind of other unnecessary informations. Please stop doing those. Okay. सो ओनली एनसीईआरटी बेस्ड होना चाहिए आपका रिसोर्स. आपको कोई भी रिसोर्स यूज़ कर रहे हो आपको बायोलॉजी प्रैक्टिस के लिए, बायोलॉजी एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए, तो वो आपको एनसीईआरटी बेस्ड होना चाहिए. ओके. ओके. सो नाउ कम टू द वेरी इंपॉर्टेंट कॉजन. I want to warn you all, please do not refer to any new book now or any other body's notes. Okay. So please try to understand that आपको अभी कोई नया बुक नहीं उठाना है. आपको अभी कोई अनदर आपको कोई फ्रेंड का, आपको कोई सीनियर का नोट्स अभी नहीं पढ़ना है. जो नोट्स आपके खुद का बनाया हुआ है वही नोट्स आपको पढ़ना है. प्लीज डोंट रनिंग बिहाइंड एनी अदर वर्ड नो कि हाँ मेरे फ्रेंड और कोई ट्यूशन और कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं, उसका भी नोट्स देख लिया कि वो क्या क्या पढ़ा है, इसका ये वीडियो देख रहा हूँ, वो वीडियो देख रहा हूँ. प्लीज स्टॉप wasting your time. Okay, please don't fall into FOMO. What is FOMO? FOMO is fear of missing out. Okay, please don't fall into FOMO, and please stop running behind any new material or new book, but practice your own or revise your own self prepared notes. Revise your own textbook NCERT. Just stick to your NCERT and your self prepared notes. बार बार वही आपको रिवाइज करना है, एक भी पॉइंट्स आपको नहीं छोड़ना है. रिवाइज as many times as you can. Are you getting this? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट आपको ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको देखो अभी रिवाइज योर ओन एनसीईआरटी एंड सेल्फ मेड्स नोट्स अगेन एंड अगेन एंड अगेन. दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग which I want to tell you. Okay, so I think you got this point that आपको खुद का एनसीईआरटी पढ़ना है. आपको कोई नया चीज़ नहीं पढ़ना है. आपको एनसीईआरटी और आपको जो खुद का जो नोट्स है वही करना है. एमसीक्यू के लिए आपको कोई एनसीईआरटी बेस्ड, बायोलॉजी के लिए कोई एनसीईआरटी बेस्ड कोई मटेरियल उठाना है. और इफ आई टॉक अबाउट योर फिजिक्स केमिस्ट्री, देन ऑब्वियसली इट्स इनफ. ये कोचिंग मॉड्यूल्स आप कर रहे हो और जो मॉक टेस्ट दे रहे हो वही क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो. दैट विल बी मोर देन इनफ. ओके. So if I want to summarize now that what I have told till now, that very simple thing is that there now in the upcoming 2 months आपको सिर्फ पढ़ाई करना है, बहुत सीरियस पढ़ाई करना है. ये सब मत सोचना है कि आप अभी आपको होगा या नहीं होगा, आपने पहले पढ़ाई किया और नहीं किया, ये सब आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है. और आपको मतलब इज इट रियली पॉसिबल टू क्रैक नीट और नॉट अभी 2 महीने में, ये सबको नहीं सोचना है. देखो क्योंकि ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप कितना मेहनत करोगे. ठीक है ना, ये आप कितना मेहनत करोगे इसके ऊपर डिपेंड करेगा. सो प्रूव देम रॉन्ग जो बोलता है कि हाँ ये पॉसिबल नहीं है, पर उसके लिए आपको उतना मेहनत करना पड़ेगा. ये इतना आसान नहीं है. आर यू गेटिंग दिस? सो द वेरी सिंपल, माई सिंपल सजेशन इज दैट देखो आपको ये जो अपकमिंग जो टाइम है उसमें देखो हर रोज़ एवरी डे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में एक टाइम देना है. आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना है जो आपको रोज़ आपको तीनों सब्जेक्ट के लिए इक्वल टाइम रखना है. तीनों सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ना है. और देखो जैसे कि बायोलॉजी के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना है एक टाइम में, और कुछ टाइम आपको अलॉट करना है जब आप उसी टाइम में एमसीक्यू सॉल्व करोगे. तो एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए एक इंपॉर्टेंट टाइम चाहिए. उसके लिए मैंने कोई एनसीईआरटी बेस्ड रिसोर्स उठाना है, मैंने वो आपको बोल दिया. अब देखो फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए भी देखो यहाँ पे क्या क्या है कि आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है. आपको अगर कहाँ पे लग रहा है कि कोई भी एक चैप्टर है जहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट लैक कर रहा है, तो उसी जगह पे वो क्वेश्चन आप कोई वन शॉट वीडियो देखो और आपको कॉन्सेप्ट बनाओ. ओके. बट यू नो नाउ दिस इज द टाइम टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर नंबर ऑफ एमसीक्यूज, मोर नंबर ऑफ पीवाईक्यूज. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. अब देखो यहाँ पे एक चीज़ है कि देखो जो अब इसीलिए यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि देखो मॉक टेस्ट. नाउ आई विल सजेस्ट ऑल द कैंडिडेट्स टू गिव मॉक टेस्ट एवरी वीक नाउ. अब देखो अभी एक भी वीक आपको मॉक टेस्ट नहीं छोड़ना है. आपको हर एक वीक आपको मॉक टेस्ट देना है, क्योंकि मॉक टेस्ट देने से पता चलता है कि आपको कहाँ आपको कोई कमजोरी रह गया है. आपको इफ यू हैव एनी वीकनेस इन एनी पार्ट, देन यू कैन डिस्कवर दैट बाय गिविंग मॉक टेस्ट. एंड ऑब्वियसली मॉक टेस्ट अगर by giving a mock test every week, then only you can enhance your speed, and also you can find out where you are actually finding difficulty, in which part you are basically weak.
So now in mock test जो students के देखो mark 600 के ऊपर आ रहा है, then my suggestion to do is now revise ना revise in a retrograde manner. इसका मतलब ये होता है कि जैसे देखो आपको अभी ये mock test देने के बाद जैसे कोई आपको पता चल रहा है कि हाँ ये चैप्टर के मेरा कोई वीकनेस रह गया है, तो वो चीज़ आपको स्ट्रॉन्ग करो, वो कॉन्सेप्ट देखो और एक बार वीडियो देखो और आपको कॉन्सेप्ट बनाओ और मोर एंड मोर प्रैक्टिस करो। और जिसके जो स्टूडेंट जैसे मेनली देखो 400 to 600 में लाई कर रहा है जिसका मार्क्स, उसको देखो मेरा सजेशन है कि ये है कि देखो आपको आप पूरा एक चैप्टर को पढ़ो और बार बार रिवाइज करो, ठीक है ना। रिवाइज करो, अपने PYQ अच्छे से प्रैक्टिस करो, PYQ अच्छे से प्रैक्टिस करो रोज एवरी डे यू गिव enough time for solving a MCQs. ओके, एटलीस्ट एवरी डे 50 फिजिक्स एंड 50 केमिस्ट्री MCQs आपको सॉल्व करना ही चाहिए। उसके साथ साथ आपको पढ़ना पड़ेगा NCERT फॉर बायोलॉजी एज वेल एज केमिस्ट्री, इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड बायोलॉजी का केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का MCQ सॉल्विंग इज इक्वली इंपॉर्टेंट। बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि बायोलॉजी के दैट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट टू सॉल्व, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है थ्योरी पढ़ना। ये एब्सोल्युटली रॉन्ग कंसेप्शन है। बायोलॉजी का भी आपको MCQ सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। Okay, so these are the things which I would request all of you to do. Now see, I will make a detailed video and detailed and exhaustive discussion on how to tackle in with each and every subject, but वो मैंने इस वीडियो में नहीं कर पाया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, तो इसलिए मैं एक अलग अलग सब्जेक्ट को लेकर डिटेल एंड एग्जॉस्टिव वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे मैंने दिखाऊंगा कि कैसे बढ़ना है, कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, and if you liked my video, if you find this video to be helpful, then don't forget to subscribe my channel and like this particular video. I meet you soon in the next video.